Hello student, how are you having all? Today we have to learn subject maths and new chapter number 15 probability. We have to already learn in the standard 8 for the basics probability. So trial that means the trial is an action which result in one or several outcomes. Okay, that means for example if you try to start a scooter. Okay, if you try to start a scooter so possibility क्या है if you try to start a scooter so in case वो start भी हो सकता है और start नहीं भी हो सकता है. Okay, if you try to start a scooter so it's start भी हो सकता है और start नहीं भी हो सकता है. Okay, so वो क्या है ट्रायल है. वो क्या है ट्रायल. ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन वन और several outcomes which result in ones or several outcomes. Okay, again when a die is thrown. Okay, when you have a die is thrown, when die thrown. Okay, thrown that means वो आपने सांप सीढ़ी गेम में वो डाई देखा है वही. when you die a थ्रोन सो वो 6 पॉसिबिलिटी हमें मिलेगी कि थ्रोन में नंबरिंग क्या है 1 2 3 4 5 and 6. when you die a थ्रोन सो नंबरिंग इन केस 1 भी आ सकता है 2 भी आ सकता है 3 भी आ सकता है 4 भी आ सकता है 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है. वी हैव नो आइडिया. ओके, when you die is thrown so what are the 6 possibility outcome. So if possible number 4, if possible number 6. ओके, सो वो क्या है ट्रायल है. वो क्या है ट्रायल. ओके, ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट इन वन और several outcomes. एन इवेंट क्या है ये क्या हुई इवेंट. इफ़ यू ट्राई टू स्टार्ट अ स्कूटर ये क्या हुई इवेंट. ओके, this is when die a thrown so what is the what are the 6 outcomes. so वो क्या हुई इवेंट. ओके, ये क्या हुई इवेंट. An event for an experiment is the collection of some outcomes. Okay, an experiment is the collection of some outcomes of the experiment. Events are usually denoted by a capital letters A, B, C, etc. Okay, that means event को हम denoted करेंगे capital letters A, B, C to ... etc. Okay, so ये event दिस कॉल्ड इवेंट और उसमें जो ट्रायल उसमें जो पॉसिबिलिटी मिलती है वो क्या है ट्रायल. ओके, ट्रायल और इवेंट में डिफरेंट क्या है ये इवेंट हो गई और उसमें जो पॉसिबिलिटी मिलती है आउटकम मिलते हैं वो ट्रायल है. सो probability is the ratio of number of trial in which event occurred and divided by the total number of trial. Okay, divided by the total number of trial. For example, this if you try to start a scooter. Okay, so possibility आउटकम कितने हैं 2. सो यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट मीन्स आउटकम कितने हुए 2. देन नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट दैट मीन्स स्टार्टेड और नॉट स्टार्टेड. ओके, वो क्या है द नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट accurate. ओके, probability that means the ratio of number of trial in which event accurate and divided by the total number of trials. So let's do it. Example number 1. So example number 1. Okay, a coin is a toast. A coin is toast 1000 times. 1000 times with the following frequency.
frequency. Head is head 455 and tail 545. So compute the probability for each event. So a coin is tossed 100 times. Okay, we have to toss the coin 100 times. So total number of trials is 100 times. Answer: total number of trials is equal to 1000 times. A coin is tossed 1000 times with the following frequency. That means this is an event कि 1000 टाइम में से 4055 455 is a head and 545 is a tail. So this is the event. We have to two event, so denoted a different letter. First event is called A and the second event is called B. So first event 1, event A is equal to head 455. So probability P of A is equal to number of trial in which event accurate, number of trial in which event accurate and divided by total number of trial Okay, number of trial in which event accurate, that means number of trial in which event accurate वो क्या है 4455. Okay, so 455 and total number of trials 1000. So 1000, that means we have to cut 3.1 और यहाँ पे ज़ीरो कितने हैं 30 है. सो हम 3 पॉइंट कट करेंगे. सो पॉइंट देन आफ्टर 3 प्लेसेस. सो 5 5 4 and 0. सो 0.455. सेकंड इवेंट क्या है टेल्स आउटकम इज 545. सो सेकंड इवेंट को हम डिनोटेड बी करते हैं. इवेंट बी इज इक्वल टू 555. ओके, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 1000. ओके, सो इवेंट को हमने डिनोटेड बी से किया है. सो पी ऑफ बी. ओके, राइट डाउन क्या पी ऑफ बी. सो हियर इज इवेंट इज ए. सो वी हैव टू राइट डाउन पी ऑफ ए. Here is denoted by event B. So write down P of B. P of B is equal to number of outcomes and total number of trials. Okay, number of outcomes, okay, and total number of trial. Number of outcomes 545 and total number of trial is 1000. Okay, 1000, that means we have to cut 3 point. So write down point then after 3 places. So 5 4 5 and 0. So 0.545. Okay, so you have to find out probability. So find the total. You have to find out the probability. So in this question we have to observe the total events, total outcome. So you can see that a coin is toasted 1000 times. So total outcome 1000 times है and with the following frequency. So frequency event is a 2 head and tail. 1000 टाइम में से 555 is a head and 545 is a tail. So we have to do event. So event 1 head is equal to 455 and P of A is equal to number of trial in which event are accurate and divided by total number of trial. You have to write down this formula all sum. Okay, so easy है. Then after question number 2.
Question number 2. Two coins are toasted simultaneously 500 times. Two coins को टोस्ट करेंगे. Two coins are toasted simultaneously 500 times. How many times? 500 times. So total जो क्वेश्चन में से फर्स्ट वर्क आपको क्या करना है कि टोटल फाइंड आउट कर देना है. टोटल हाउ मेनी टाइम्स? 500. ओके. और फर्स्ट इवेंट क्या है? टू heads is equal to 105 times. This is a first event. Second event, one heads is equal to 275 times. And the third event, no head so is equal to 120 times. That means two coins are toasted. So coin में we have to head and tail. Okay, we have to toasted two coin 500 times. So event क्या है कि two heads 105 times. So two head outcome है 105 times. One head 275 times. That means two coins हम टोस्ट करेंगे. So one head होगा और two tails होगा 275 टाइम्स. और नो हेड और थर्ड कंडीशन ऐसे भी है कि हमने टोस्ट किया और नो हेड 120 टाइम्स. दैट मीन्स दिस इज अ इवेंट टू हेड, one head and no head, and total outcomes 500. So we have to denote it event A, two heads is equal to 105 times. Okay, and total is a 500 times. So P event A है, so denoted by P of A is equal to number of outcomes. आप यहाँ पे वो भी फॉर्मूला लिख सकते हो कि नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट अक्यूर, नंबर ऑफ आउटकम्स एंड डिवाइडेड बाय total number of trials or outcomes. So number of outcomes is a 105 times and divided by 500. Okay, this point is important. In this chapter probability 100 डिनोमीटर में अगर यहाँ पे 5 है, सो आपको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है. न्यूमेटर और डिनोमीटर में मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है. वाई? बिकॉज 5 2s are 10 और लास्ट 2 0 और 105 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. सो 2 5s are 10 एंड 2 1s are 2, सो 210. ये स्टेप हमने क्यों किया कि जो आंसर था 105 अपॉन 500. सो आपको डिवीज़न करना पड़ता. 105 अपॉन 500 का डिवीज़न करना पड़ता. सो डिवीज़न से शॉर्टकट वे डिवीज़न नहीं करे तो ये चीज़ पॉसिबल है कि यहाँ पे 500 है, सो 5 का ऑपोजिट आपको 2 लेना है. वाई? बिकॉज 5 2s are 10. सो पॉइंट कैंसलेशन, पॉइंट हम इजीली कट कर सकते हैं. अगर डिनोमीटर में 2 होगा सो हम मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे. ओके, यहाँ पे डिनोमीटर में 5 है, सो हम पॉइंट कट कर सके. और यहाँ पे 1000 100 10,000 1 लाख ऐसा कोई नंबर हमें मिले. दैट्स वाई हमने 500 को मल्टीप्लाई बाय किया 2 से. अगर यहाँ पे 2 होता तो हम मल्टीप्लाई बाय करते 5 से. ओके, अगर हमने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय किया सो न्यूमेटर में भी मल्टीप्लाई बाय करना, तभी ये क्या होगा? बैलेंस होगा. अगर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा सो आंसर क्या होगा? 105 अपॉन 500. ओके, दैट्स वाई हमने मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे डिनोमीटर में किया. सो हमें न्यूमेटर में भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 2 से. वाई? बिकॉज ये बैलेंस होगा. ओके, और हमने मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे 1000 100 10,000 लाख ऐसा नंबर मिलेगा. सो पॉइंट इजीली कट होगा. यू कैन सी डैट कि लास्ट 0 इज अ कैंसल आउट. नाउ 21 अपॉन
100. सो आंसर क्या आएगा 100, दैट मीन्स 2 पॉइंट कट करना है, सो 1 and 2, सो 0.21. ओके, अगेन जो total heads is equal to 105, sorry, 2 heads is equal to 105 times and total outcome is a 500 times. So P of A is equal to number of outcomes divided by total number of outcomes. So number of outcome is a 500 and total number is a 500. So आपको यहाँ पे आंसर हमारे पास था 105 अपॉन 500. सो डिवीज़न करना पड़ता है. सो डिवीज़न लॉन्ग वे है, सो ये शॉर्ट वे है. हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 है, सो हमें 2 से मल्टीप्लाई बाय करना है. और अदर वे कन्वर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस, अगर यहाँ पे 2 होगा तो हम 5 के साथ मल्टीप्लाई बाय कर दें. ओके, सो 5 2 ज़ा 10 एंड 2 0 लास्ट में ऐड कर दिया. सो एंड 105 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 210. सो 0 0 इट इज़ अ कैंसल आउट, सो 21 अपॉन 100, सो 0.21. ओके, देन सेकंड इवेंट बी क्या है कि वन हैड हाउ मेनी टाइम्स, वन हैड 275 टाइम्स. ओके, वन हैड 275 टाइम्स एंड टोटल 500 टाइम्स. Okay, so we have to denote it by event B. So P of B is equal to number of outcomes and divided by number of outcomes, number of trial, okay, or number of trials or total number of trials. Okay, trials. So number of outcomes or trial is a 275 divided by 500. अब आपको क्वेश्चन में यहाँ पे क्या करना होगा कि डिवीज़न करना होगा. 275 डिवाइडेड बाय 500. इट्स इजी वे, यहाँ पे 5 है, सो हम मल्टीप्लाई बाय करेंगे 2 से. वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2, सो हियर इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 2. सो 5 2 ज़ा 10 and last 2 0 add and 275 multiply by 2, so 5 2 ज़ा 10, 1 ups, 2 7 ज़ा 14, 14 plus 1 15, 1 ups, 2 2 ज़ा 4 and 4 plus 1 5, so 515. So last 0 is a cancel out, so 55 upon 100, 55 upon 100, so 55 upon 100, that means 0.55. Okay, you have to cut 2.100, that means 2 point, so 1 and 2, so point is here, so 0.55. ओके, आपको डिवीज़न यहाँ पे डिवीज़न करना पड़ा तो भी आंसर 0.55 आता, बट वो लॉन्ग प्रोसेस होगी, दैट्स वाई. एंड इवेंट सी कि नो हैड, so how many times, 120 times, 120 times. Here is denoted by C, so write down P of C is equal to, as it is, write down this formula. Okay, number of outcome and total number of outcome. So 120 and total number of outcome is a 500, so 0 0 is a cancel out, so 12 upon 15. अब आपको करना होगा 12 upon 15 का डिवीज़न. इन अदर वे डिवीज़न करना शॉर्ट, इन अदर वे हम ऐसे भी कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये स्टेप है कि यहाँ पे 5 है, सो हम मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. सो 12 2 ज़ा 24 एंड 52 ज़ा 100, सो आंसर इज 0.100, that means we have to cut out 2 point, so 1 and 2, so point is here, so 0.24. ओके. और हम और जितने भी इवेंट है उसकी पॉसिबिलिटी 1 है, जितने भी इवेंट है उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 1 है. अगर आप ये सब इवेंट का प्लस करोगे सो आंसर 1 आएगा. यू कैन सी दैट कि हियर इज फर्स्ट इवेंट 0.21, फर्स्ट इवेंट 0.21,
0.21, second event 0.55, and third event 0.24. So 5 plus 4 9, 9 plus 1 10, 1 ups, and 5, 2 plus 2 4, 4 plus 1 2 plus 2 4, plus 1 5, and plus 5 10, 1 ups. So 1.00, that means 1. दिस इज़ सो डैट कि हमारे पास जितने भी इवेंट है, हमारे पास यहाँ पे कितनी इवेंट है, 3 इवेंट है, 2 हेड्स, 1 हेड, नो हेड्स. ओके, अगर ये सारे इवेंट का हम प्लस करेंगे सो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 1. ओके, पॉसिबिलिटी क्या है, 1. ओके, कोई भी इवेंट की पॉसिबिलिटी 1 और 0 हो सकती है. कोई भी इवेंट की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 1 और 0. ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि फर्स्ट इवेंट में आंसर आया है 0.455 और सेकंड इवेंट में आंसर आया है 0.545. अगर आप प्लस करोगे सो 5 प्लस 5 10, 1 अप्स, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 1 अप्स, अगेन 10. So you can see that 1.00, that means once. So event की possibility क्या होगी, 1 और 0. Okay, so here is also 1. Okay, so you can try this example number 3. Okay, you can try this example number 3 or एक्सरसाइज हम लर्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.